talking about this part. Unit 1, data collection, distribution, presentation, authentication and analysis. This is my target today. What is important to know that what is data and what is data collection. What is data and what is data collection? Data collection is the systematic process of gathering information, which is observation or measurements you make on specific variables of interest. So variable is something which varies. It can be 5 balls, it can be 6 balls, it can be 7 balls. So for that you designate them either as X or Y or Z, whatever. So that is a variable. And you have another term known as constant, which always stays, like gravity, that is 9.8 meters per second square. So there are some constants always, and variables always variable. The method of data collection depends on the research question. So what do you want to do? Whether you want to observe how many mice are in the room, or how many cockroaches in the room, or whether you see that you want to find out whether the number of mice and cockroaches is related with the temperature of the outside. So depending on this, you have to collect data accordingly. So if you have to collect only data of mice in the room, then your task is very simple. You simply count 1, 2, 3, 4, 5, 6 mice which is present. And if it's your problem is only to collect the number of cockroaches in your room, you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now if your problem is to sort of understand the number of, if the number of mice or number of cockroach, whether the number increases during high temperature or low temperature, you need to measure count the number of cockroaches and number of mice at different times of the day and at different seasons. So your collection of data is as per your research question, which question you give for research. So data are of two types. First is primary data, collected direct for the first time by the researchers from the source. For example, you wish to know what is the income of all the BV College students' parents. That is it. So you go to all the meet with all the parents and ask them interview. You can give them interview, and from that survey or interview you can understand, okay, आपका कितना मिलता है. कोई बोला 10 लाख, कोई बोला 15 लाख, कोई बोला 20 लाख, कोई बोला 5 लाख, something like that. You do it. So this data which you collect back, that is known as primary data. So secondary data is like consensus data, government, publication, website, books. This is already present in the database. So you want to draw, this data is there. You have the number of mice and number of cockroaches, the temperature of the room at different types of the season. You all have the data. Now you are taking the data out, and then with that you are doing certain tests, and after that you are coming to an inference. This is secondary data. Original data collection is the primary data, and data that has already been collected by someone else, that is the secondary data. The next part is data classification. So it is important to classify your data or arrange data into groups or classes. Say for example, a room of you have a city where you have 100 children, 100 people from 10 to 20, 100 people from 20 to 30, 100 people from 30 to 40, 90 people from. So to understand what is the population distribution,
Total there are 1,000 people in that city. But you want to understand exactly how the population looks like. 10 to so it is important to divide them in the class. First class is children who are from 0 to 10 years. This is class 1. Then children from 10 to 20 years. Our children nahi hai. So you just simply see class. From this you understand, and then people from 20 to 30, you can see that there are some people as they grow old, the number is decreasing. So you are classifying the data ko you got an idea data how it looks. So this classification can be a geographical classification. The data is classified based on geographical locations. For example, sales of a product in different cities. Example, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. Delhi में कितना बिकता है? How many are sold in Mumbai? How many sold are in Kolkata? So this maybe somebody has got this data and put it in the website. Now you that is it has those who have done it. It's the primary data. You're taking the data out. You're taking it as secondary data. But whatever be the reason, you are classifying it. Sales in Delhi, sales in Mumbai, sales in Kolkata, sales in Chennai. Then you have a chronological. So population of a country, 1991 mein this was the population, 2001 this is the population, 2021. So you are classifying the data of all the population whoever lived, and you are actually understanding this data. You have also qualitative classification. Male, female, tall, short, something like that. It can be a simple classification like male, female, literate, illiterate, something like this. It can be a manifold classification. So male, literate, male, illiterate, female, literate, female. So just male, female nahi hai. You are putting one more attribute, that is there, whether it is literate or illiterate. This is a quality star 5 बहुत अच्छा. If you like it very much, say 5. If you like it less much, 4. If it's okay, then 3. If it is not that good, 2. Dirty, 1. Faltu, totally faltu, 0. So this is also these are qualitative classification. Also you have quantitative classification. Quantitative is with numbers, counting. You can have a discrete variable and a continuous variable. Discrete variable can only take specific distinct values, usually whole numbers. 1, 2, 3, 4. 1 egg, 2 egg. So you can never say 1.5 eggs. तो होता नहीं, 1.5 अंडा नहीं होता है. अंडा 1 होता है, नहीं तो 2 होता है, नहीं तो 3 होता है. So it is discrete variables. और number of students in a class. 1.5 students बोल नहीं सकता, आधा student नहीं होता है. होता है तो पूरा student. 1 student, 2 student, something like this. Now continuous variable is height. Height of all students in the class. Somebody is 6. Somebody is 6.01, somebody is 6.02. एक constant gradation होता है. ये नहीं तो ये एकदम 6 है, एकदम 7 है, एकदम 5 है. It's not. तो एकदम एक series continuous होता है. 6.01, 6.02, 6.03 करके 6.1, 6.2 ऐसे करके. This is a continuous variable. Height of temperature of a room. तापमान 35 से 36 डायरेक्ट नहीं होता है. 31, 31.2 तब धीरे धीरे ज़्यादा कम होता है. समथिंग लाइक दैट. नाउ इट व्हाट वी आर कमिंग टू अ थिंग नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स. कुछ किसी को 5, 7, 10, 15 ऐसे करके यू आर डूइंग है. यू हैव राइट इन दिस डेटा. बट if you make it into a कितना बार कितने को 5 आया, कितने बार, how many times 7 comes, how many times 6 comes, how many times 8 comes. So you make it. First write the marks 5, 6, 7, 8.
So 4 people got 5, 2 people got, so this is known as the frequency distribution. You can have this is a simple frequency distribution. You can have it as a grouped frequency distribution. Simple में just like mark 5 6 7 8 5 4 people got 5, so many people got 6, so many people got ऐसे. But here for example you are grouping something, height 150 to 155 centimeter, how many you got? 3. 155 to 167, how many? 5. 160 to 165, 7. 165 to 174. So you are putting a class intervals. So what you are doing, you are putting class limits. A class, this is one class, 4-5 class. So you have a boundary. Boundary is 150 to 155. Limit 150 to 155. एक 150 से जो नीचे है वो दूसरा क्लास में है, 155 से जो ऊपर है दूसरा क्लास में है. It is something like this. मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट. So data can be represented pie chart. Pie chart मतलब गोल पाई चार्ट. एक कभी कभी गोल पाई चार्ट दिखता है, वो है दैट इज आई पाई का. देन यू हैव अ बार डायग्राम. बार डायग्राम ऐसे दिखता है. बार डायग्राम ऐसे दिखता है. दिस इज अ बार डायग्राम. पाई चार्ट ऐसे दिखता है. इससे इतना ये डॉट 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 डॉट, दिस इज पाई चार्ट. इस तरह से रिप्रेजेंटेशन क्लासिफाइंग डेटा, दैट इज दोज आर बार डायग्राम एंड पाई चार्ट. हिस्टोग्राम, इसका हिस्टोग्राम कैसे करोगे? यू सिंपली ड्रॉ दिस. हाँ, हिस्टोग्राम में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया, यहाँ पे क्लास दे, फर्स्ट क्लास, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. तुम यहाँ पे क्लास 1 दिया, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5. क्लास 0 से 5 कितना फ्रीक्वेंसी है? ये से 5, ये 10. सो यू कैन मेक इट 5. उसके पास में कितना है? 12, थोड़ा सा ज़्यादा. देन 20 to 30, 18, उससे भी ज़्यादा. हाँ, एंड 30 to 40 उससे भी ना थोड़ा सा कम है. सो दिस इज नोन एज अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम. So far clear? Yes, sir. Okay. Then you have a frequency polygram. So what does a frequency polygram show? Frequency polygram is a line graph representing frequency distribution. It is obtained by joining midpoints to the top of the histograms. So ऐसे you have made a histogram. इसका मिड पॉइंट करके इसको ज्वाइन कर दिया. हाँ, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम. सो तुम अगर ऐसे देखो, सेम चीज़ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, एक ही चीज़ है. लेकिन दीज आर यूर जॉइनिंग द मिड पॉइंट. इस बीच में हिस्टोग्राम का बीच का मिड पॉइंट यू आर टेकिंग. सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम. Next is you have a frequency cumulative frequency curve or an ogive. So an ogive or cumulative frequency curve is a graphical representation of a cumulative frequency distribution.
It is a smooth curve obtained by plotting cumulative frequency. So for example, I will show you how an ogive looks like. The ogive, say for example, you open Google, I will show you an ogive. This type of smooth curve, number of students, marks, this is ogive. इस तरह का कर्व को ओजाइव बोलते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें यू ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस इज एन ओजाइव frequency curve. So 50 students who have got 10 marks. You have something like 45 students who have got 20 marks. Instead of drawing histograms, bars, you are drawing an ogive like this. Sometimes this is also very useful to understand. Let's get back to this part. Now let me show you how a box plot or a Wixker plot looks like. Age by group. This is a box plot. 20, 40, 60, 80 at a particular time. Let us look at another box plot. Box plot of score. Teaching method, score. Method 1, method 2. मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन. So different styles of teaching method. And what is the score of the students? Average. There are 100 students. So sometimes इसमें सबको हमेशा सेम मार्क्स नहीं मिलेगा. They will not get different marks at different time. So this box plot is a different issue then. So ये error bar है. We will come to error bar later, but this is actually how a box plot looks like. Okay, clear so far? Yes, sir. यहाँ पे examples है. You can plot these examples and you can find out. Then you have the probability theory or binomial distribution or Poisson's distribution. You have all these theory. So what is the probability theory? So the probability theory is a measure of the likelihood that an event will occur. It is a number defined. It is a quantified as a number, number between 0 and 1. So 0.5 means 50% chance that event will happen and 50% chance that event will not happen. Like a coin with one side heads and one side tails. If you toss that coin, there is a 50% chance that it will be head and a 50% chance that it will be tail. So this is the probability theory. Then you have the binomial distribution. The binomial distribution describes the number of success in a fixed number of independent trials. So binomial में first thing a number of successes. Now you toss the coin 10 times.
व्हाट इज द चांस दैट हमेशा हेड होगा एंड व्हाट इज द चांस दैट हमेशा टेल्स होगा, नहीं है बट एक चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7, सो यू टॉस इट 10 टाइम्स. उस बार एक बार यू आर टॉसिंग इट, बट नाउ यू आर टॉसिंग इट 10 टाइम्स. सो यू आर टेकिंग टू फैक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, independent trials, independent times you're tossing, and number of success in that trials, either success or failure, it depends. So this is a binomial distribution. So these are the formulas. Basically they will not ask you to, but you have to remember these formulas. Poisson's distribution. Now let us go to the measures of central tendencies. First, central tendency मतलब बीच वाला point तुम देखना चाहते हो. That can be 100 data. You can take an average, arithmetic mean. X bar is the sigma, and you are actually counting it as sigma of all the x's, 10, 15, xi, ये भी xi, this is also xi, this is xi. So it's the sum of all the xi, and number कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है. सो डिवाइडेड बाई 5, दिस इज नोन एज एरिथमेटिक एवरेज. ये तुम एवरेज तो सबको सब जानते हो, लिखते हैं इस तरह से. मीडियन, बीच वाला ऑब्जर्वेशन फॉर दिस डेटा, ऑड वाला जो डेटा दिख रहा है, ये वाला डेटा 37295, ऑर्डर 235 है, इसको ऑर्डर कर दिया. यू ऑर्डर दिस डेटा. इसका बीच वाला पॉइंट क्या था, 5. सो अगर इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ, इफ n इज ऑड, नंबर ऑड है, मीडियन इज n plus 1 by 2 number of observation. 5 plus 1 divided by 2, 6 divided by 2, that is the third value is the median. If n is even, n by 2 plus 1 observation. सो ऑड है तो बीच वाला इजीली आ जाता है, लेकिन जब मीडियन इवन होता है, अगर 4 है, बीच वाला कौन सा लोगे, से ये वाला 5 नहीं है, लास्ट वाला 5 नहीं है, तो 3729 है, और 10486, तो इसका इवन होगा 4 और 8, दो, क्योंकि दो मीडियन रहता है. वन इज द n by 2th ऑब्जर्वेशन एंड द अदर इज n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन. So this is also a median. You can have it for group data. The formula is different, but principle is the same. And mode. In this set of data, which number comes maximum? You can make it into a group data class interval बना के. Simple भी, you can keep it as simple. So 2 3 4 4 5 5. इसमें how many times you can see 5 is repeated maximum. So therefore it is known as mode. दो बार सिर्फ, so you have to make a frequency table and a class interval. If you make it, you can get your mode. Now you have got measures of dispersion. Variance का formula है sigma square is equal to sigma xi. Xi is any valuable, and what is and you have a mu over here. ये अटक गया क्यों? So sigma square is the variance, xi is the mean or average, or micro is the average of that population for ungrouped. In the population average is sigma, और उस population का सब population in your data mu is that value. अगर वर्ल्ड का एवरेज अगर से इट इज 50 एंड इंडिया का वर्ल्ड का इंडियाज एवरेज इज 45, सो यू आर ट्राइंग टू सी, सो xi minus mu is 50 minus 45. How it varies from the world's population. So variance is the sigma.
Similarly, standard deviation, how it deviates from the central tendency. Sigma is under root of a square. एक होता है होल वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन मीन, और एक होता है एक सैंपल मीन. पॉपुलेशन मीन सब मिला के सब जगह का, एंड सैंपल मीन है तुम्हारे पास जो सैंपल है उसका मीन. सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर कितना, इतना प्लस माइनस 1 हो सकता है. इसका व्हाट इज द प्राइस? प्लस माइनस 5 रुपीज़. 50 प्लस माइनस 5 रुपीज़. मैं जो बात बोल रहा हूँ इसमें प्लस माइनस 5 एरर हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. सो ये एक्चुअली तुम्हारा दिस वाज द, हाँ तो वो वेरिएंस वाला थोड़ा समझ नहीं आई थी. क्या वेरिएंस? देखो, वर्ल्ड का पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, दैट इज वन वैल्यू. ठीक है, x पकड़ो और y पकड़ो तुम्हारा सैंपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड व्हाट इज द वेरिएंस? ये दिस यू कैन गेट, दिस इज द वेरिएंस. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर फॉर पॉपुलेशन, ए स्क्वायर फॉर सैंपल. सिग्मा स्क्वायर इज, एग्जाम्पल देखो, डेटा दे, ये लुक एट दिस डेटा 2 4 6 8 10. इसका x इज 6, स्क्वायर डिफरेंस इज 2 minus 6 स्क्वायर. सर वो स्क्वायर डिफरेंस 2 माइनस 6 क्यों होगा? सैंपल इसको तुमको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, तुमको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ. Average of the square difference from the mean. Say for example, students in a class. ये 2 होता है, एक ये इस डेटा में देखो, इस डेटा को मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, दिस डेटा इज 2 4 6 8 10. सो xi क्या होता है? xi कैन बी 2, xi can be 4, xi can be 6, xi can be 8, xi can be 10. Agreed? और इसका what is the average? और एवरेज मीन क्या होता है? 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 5. तो उसको that comes as 6. अब स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है? 2 minus 6. पहला xi क्या होता है? xi माइनस म्यू जो है, या xi माइनस एवरेज, जो सैंपल का पॉपुलेशन देख रहा हो. एक वर्ल्ड का पॉपुलेशन अलग होता है, सैंपल का पॉपुलेशन अलग होता है. ठीक है, या पॉपुलेशन का ये अलग होता है, वेरिएंस अलग होता है, एंड योर सैंपल वर्ल्ड एंड इंडिया. से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सैंपल इंडिया है लेकिन टोटल वर्ल्ड का होता है. सो दिस इज एक्चुअली वेरिएंस इज 16. अगले वाले का होता है 4 minus 6 स्क्वायर. हाँ, द वेरिएंस इज 4. सो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू रिमूव द नेगेटिव वैल्यू. वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए इसको स्क्वायर किया जाता है. ठीक है, क्योंकि फॉर 2 minus 6 क्या होगा? -4. यू कैन नॉट सी दैट, तो उसको प्लस करने के लिए उसको स्क्वायर कर देता है. अब वो स्क्वायर करके पता तो नहीं चलता है. फॉर दैट यू नीड स्टैंडर्ड डिविएशन. उस स्क्वायर रूट का उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनाना पड़ता है. तब इसमें क्या होगा? सो टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू की स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वेरिएंस करना पड़ता है, सो दैट योर स्टैंडर्ड डिविएशन यू कैन शो पॉजिटिव वैल्यू. बट प्लस माइनस अगर दोनों को अगर दिखाना है तो यू कैन गेट इनटू स्टैंडर्ड एरर.
सो ग्राफ में ऊपर 5 रुपया ज़्यादा भी हो सकता है, 5 रुपया कम भी हो सकता है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर। यस। ठीक है, तब आज यहीं पे रुकते हैं, ये कंप्लीट हो गया एक यूनिट। सर इसमें से क्वेश्चन आता है? हाँ आता तो है, आता तो है, आता तो है। वही तो सर, सम में यूज होगा ना ये सब कंसेप्ट। हाँ हाँ, यही सब चीज़ आराम से जहाँ कहीं से भी पढ़ लेना, ये सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। सर आप भेज दीजिएगा, हाँ सेंड कर दीजिएगा।